Hello learners, welcome back to the channel Economics at Ease. I'm Nida, your educator. और मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेशनल इनकम में बहुत क्वेश्चंस गिवन है. मैंने इलस्ट्रेशंस भी आपके सब सॉल्व करा दिए थे, सब समझा चुकी हूँ मैं. बट नाउ इट्स अनसॉल्व प्रैक्टिकल्स. हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं विद सॉल्यूशंस. सो वन बाय वन आई एम टेकिंग हियर. सो for regular practice and easy concepts, subscribe to the channel now so you never miss the next numerical. Okay, so today we are going to start question number 38. I have already shared the screenshot in the previous video. That's for your homework. But still, again, for new students who have joined us and they are practicing national income with me, you can take the screenshot. The book is Sandeep Garg. Okay, so इसमें काफी अच्छे से जो है questions given हैं. Okay, so I recommend to all the students. So keep practicing with this book also. Okay. Calculate national income by income and expenditure method. That is both the methods आपको use करने पड़ेंगे. Same वही चीज apply करना है. Now what I'm going to do, I'm going to start solving the question. Okay, you just take the screenshot. Answer national income दोनों तरह से same आना चाहिए, right? So let's start here. Question number 38. Sandeep Garg book है national income. We need to calculate national income. National income by income and expenditure method. Okay. National income क्या होती है आपकी? NNP at FC. Okay. So first method is income method. So we know the rule के income method जब भी हमें calculate करना होता है, our first step is to calculate NDP at FC. Right? So NDP at FC का फॉर्मूला क्या है जो मैंने आपको बताया था? You will always remember, और कोई भी component आप मिस नहीं करेंगे. RIPEM. Several times I have told you, that is R is for rent and royalty, I for interest, then profit, then compensation of employees and mixed income. Now let's see what's given. Profit is given 60, right? Then interest is also given 500. Then mixed income 100. Then compensation of employees is 300. So what I'll do here, I'll write 300 plus 100, right? Then rent is 70. Okay, according to this, I have written the values also. 70 plus 500 plus 60 plus 300 plus 100. So you will get, after adding all these figures, 1030 crore. Okay. Now next step, जो main step है, आपको calculate करना है NNP at FC. Always remember this. And we have got already the aggregate is NDP at FC. Now follow the rules, that is the arrows. NN is common. Domestic से जब भी आप जाओगे national पे, okay, तो क्या करेंगे आप? Add करेंगे NFIA. P is always same. Factor से factor is also same. Okay, उसमें तो खाली nothing you will do here. It's not troubling. ओके फाइन. तो बस हम NFIA ही करेंगे. ओके, फिर अब नहीं हो रहा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी. NDP at FC is 1030 प्लस NFIA कितना गिवन है आपका? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज -5. सो यू विल गेट 1030 -5 इक्वल्स टू ₹1025 करोड़ में आंसर है. सो दिस इज योर आंसर, 1025 करोड़. यही आपका आंसर आना चाहिए एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू भी, राइट? नाउ लेट्स स्टार्ट योर एक्सपेंडिचर मेथड वेरी क्विकली. प्लीज पॉज द वीडियो and students, please solve it by yourself now. Expenditure method, first we need to calculate GDP at MP, and I've told you the formula for that we have created.
P, NG, and dangerous G. So P is your private final consumption expenditure, that is 460 plus net exports already given, but minus 10. So we'll put in the bracket. Then government final consumption expenditure is 100. And now comes your dangerous G. Dangerous G कैसे होता है? GDCF, Gross Domestic Capital Formation. For that we have what is given in the question? It is net capital formation. मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ नेट कैपिटल फॉर्मेशन. जब नेट ये n है और ये है आपका, ठीक है. नेट से जब ग्रॉस पे जाते हैं तो ऐड करते हैं आप डेप्रिसिएशन. रिमेंबर दिस, just add depreciation to it. So 500 plus your depreciation is consumption of fixed capital is 20. So here you have 520. This is your working 520. Simplify it. 460 plus minus 10 plus 100 plus 520. So you will get how much? 1070, right? Rupees 1070 crore. Now next step main is you need to calculate an NPAT that was being asked in the question. We have got the aggregate GDP at MP. Now follow the rules, that is the arrows. Net से gross पे गए तो माइनस करा डेप्रिसिएशन. डोमेस्टिक से हम नेशनल पे गए तो हमने ऐड करा NFIA. ओके. एंड मार्केट से जब आप फैक्टर पे जाते हैं तो माइनस करते हैं NIT. ओके, ये फॉर्मूला बन गया. पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर. GDP at MP 1070 माइनस डेप्रिसिएशन इज 20. यहाँ पर मैंने देख लिया था. प्लस NFIA, देखिए यहाँ पे माइनस का 5 था. नाउ नेट एंड डायरेक्ट टैक्सेस. नेट एंड डायरेक्ट टैक्सेस में भी कुछ नहीं करना है, सिंपली वैल्यू पुट करनी है. नॉट सिंप्लीफाई इट. 1070 minus 20 plus minus 5 minus 20. Now the answer is 1070 minus 20 minus 5 minus 20. Okay, here. Just wait. Let me see. I haven't missed anything now. So it's 1025. This is your answer. Please take the screenshot. Please try these kinds of questions by yourself also. जो भी आप कोई भी book follow करते हैं आप उसको please देखिए. So you have got the answer here. The same answer, rupees 1025 crore. Okay, by both the methods, rupees 1025 crore answer. Okay. So with this we come to the end of this part here. अभी भी बहुत से questions बचे हैं जितने भी मैं previous questions करा चुकी हूँ. आप please daily इसको practice करें so that you can score full marks in this, at least in this topic. Okay. So with this we come to the end. Hope you like the explanation. So do subscribe my channel. Okay, and keep practicing, keep learning. Thank you so much.